Hello everyone. Our new chapter is chapter 7, Introduction to Yoga, text 1. Yoga origin, history and development. Introduction to Yoga. Yoga is an ancient practice that brings harmony between body, mind and spirit. It originated in India thousands of years ago. Today, yoga is practiced all over the world. It improves physical health, mental health, and spiritual well being. Benefits by doing yoga: better health, improves flexibility, muscle tone, heart health, increase focus, mental balance, and inner peace. Yoga origin, history, and development. Yoga, a holistic practice that combines physical postures, breath control, meditations, and ethical principles, has a rich history that spans thousands of years. इट इंक्लूड्स, जैसे हमने बताया, आसन्स, प्राणायाम, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में प्राणायाम, मेडिटेशन एंड एथिकल प्रिंसिपल्स. योगा हैज़ इट्स रूट in ancient Indian philosophy and spirituality also. The word yoga comes from Sanskrit word yuj, which means to join or unite, reflecting the goal of bringing together the mind, body and spirit. Aim of yoga is to unite mind, body and soul. That means to create complete balance, inner peace and harmony between our physical posture, breath control and meditation. Yes, objectives of yoga: physical health, improves flexibility and balance through yoga postures, enhances physical fitness and help manage obesity. ठीक है, फिज़िकल हेल्थ इससे इम्प्रूव होती है और जो ओबेसिटी या जो मोटापा है उसमें भी कंट्रोल ला सकते हैं बाय डूइंग योगा रेगुलरली. Increases energy and vitality, making us feel active. By doing yoga, we feel active throughout the day. Mental clarity, reduce stress and anxiety. क्या क्या रिड्यूस होते हैं बाय डूइंग योगा? एंजाइटी दूर होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें जैसे हम ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, depression also. Improved focus and concentration. Yoga can enhance focus, concentration and mental clarity. जैसे योग पढ़ाई और कार्य में ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, हेल्प करता है. Enhance mental resilience, यानी जो मानसिक शक्ति है उसको बढ़ाती है. योग कठिन यानी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं उनको उनको फेस करने में बहुत हेल्प करती हैं. Emotional balance, emotional stability. Yoga helps regulate emotions, promoting emotional stability and resilience. Positive thinking, positive outlook. Yoga fosters a positive outlook on life and encourages self reflections.
यानी जो योग जीवन के प्रति हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको इंक्रीज करती है। ध्यान और योग से हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। योगा encourages self-realization and spiritual growth, promoting inner peace and contentment, connection to divine. Yoga can foster a deeper connection with oneself and the universe, leading to a sense of oneness, compassion, and empathy. Yoga cultivates compassion, empathy, and a sense of oneness with all living beings. यस, इन स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो आंतरिक शांति, ये योग मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। योग व्यक्ति को अपने अंदर और परमात्मा से जुड़ने का अनुभव भी कराता है। योग सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति विकसित करता है। Yes, the father of yoga, Maharishi Patanjali. Maharishi Patanjali was the father of yoga. Maharishi Patanjali was a sage and philosopher. Sage यानी ऋषि को कहा जाता है, गुरु. Considered the compiler of Yoga Sutra. He is revered as the father of yoga philosophy. He is considered as incarnation of Sheshnag, the vehicle of Lord Vishnu. He was born in Kodar, Uttar Pradesh, and later settled in Kashi. He is considered a scholar of 2nd century, 200 BC. Yes, what is Yoga Sutra? Yoga Sutra is a classical text of Indian philosophy written by Maharishi Patanjali around 200 BC. It is a collection of 196 sutras that explain the theory and practice of Raj Yoga, of meditation and mind control. Yes, the text is also divided in 4 chapters. Purpose of Yoga Sutra: to guide spiritual seekers towards self-realization. To guide spiritual seekers towards self-realization, साधकों को आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन देना. To help control mind and emotions, मन और भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाना. To attain inner peace and लिबरेशन, आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति कराना. 4 चैप्टर्स ऑफ योगा सूत्र: समाधि पदा, साधना पदा, विभूति पदा, कैवल्य पदा. Yes, these are the pictures. First picture is about साधना पदा, and just उसी के नीचे देखिए, this is sadhana pada, and first one is samadhi pada. The third one is written there, vibhuti pada, third chapter, and the fourth chapter is kaivalya pada. These are the 4 chapters. Yes, 4 chapters of Yoga Sutra. Samadhi pada focuses on the nature and types of samadhi, the tendencies of the mind, the methods for controlling them, and mental obstacle. Sadhana pada, second one is sadhana pada, जिसमें 55 sutras हैं. It is the second most important practical chapter of Maharishi Patanjali Yoga Sutra, which describes Kriya Yoga and Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga में there are 8 limbs of yoga
for the cultivation of mind and body. They are yama, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyan, samadhi. Okay, they are 8 limbs of Ashtanga Yoga in Sadhana Pada. It is a special 7 months program held at the Isha Yoga Center where participants live and practice near sacred places such as Ling, Bhairavi and Dhyanalinga. It involves practicing powerful Hatha Yoga, Seva and breaking old habits and mental barriers in life. Main goal is to create clarity, balance, emotion, stability and strong inner foundation in life. Third one is Vibhuti Pada. Vibhuti Pada, there are 55 or 56 vice versa sutra there. Vibhuti Pada focus on samaya, that combined practice of concentration, meditation and absorption, extraordinary psychic powers and critical warming against ego attachment. विभूति पदा में एक अलग सी ही ताकत आ जाती है, अलग सी पावर आ जाती थी उस समय, ठीक है, जैसे एक एलिफेंट की ताकत एक इंसान में आ जाती थी, इतनी ताकत आ जाती थी, ठीक है. को प्रैक्टिस ऑफ समया, धारणा दैट मीन्स कंसंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, समाधि दैट इज ऑब्जर्वेशन. समया यूनिफाइड ट्रेड ऑफ dharana, dhyan and samadhi, acting together as a singular powerful instrument of direct perception. Fourth one is Kaivalya Pada. It contains 35 sutra. Kaivalya Pada is the fourth and final chapter of Yoga Sutra of Patanjali, containing 35 sutras focused on absolute freedom, the mechanics of karma and the separation of pure consciousness from the material mind. These are the 4 pictures of Sutra of Yoga. First one is sadhana, first is samadhi, sadhana, then vibhuti, kaivalya, right? Yes, selected sutra for memorization and explanation. Ata yoga अनुशासनम, ठीक है, इसका अर्थ योगा अनुशासनम अर्थ है अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है, ठीक है. एक्सप्लेनेशन, दिस सूत्र मार्क्स द स्टार्ट ऑफ टीचिंग. अतः implies readiness and seriousness. Yoga is a systematic discipline and its study begins now for the dedicated seeker. यह सूत्र बताता है कि योग का अध्ययन अनुशासन, तैयारी और समर्पण के साथ प्रारंभ करना चाहिए. सेकेंड वन, योगा चित्त वृत्ति निरोधा. योगा इज द सेसेशन ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड. The essence of yoga is to still the mind when the mental modification stop. True self-awareness. योग चित्त विचित्त निरोध, योग चित्त की वृत्तियाँ का निरोध है, यानी जो मन की चंचलता है उसका निरोध है. योग का मुख्य उद्देश्य मन को शांत और नियंत्रित करना है. जब मन शांत हो जाता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है.
Yes, thank you everyone.